Hello friends, this is Vijay and welcome to Competitors World. Competitors World को अपन मन को स्वागत. So friends, today we are going to discuss some of the most important questions on medieval history. Okay, so as I told you earlier that I will cover every topic. Okay, I will fragment every topic into small parts and I will bring some important MCQs for you. Okay. So today I have taken the topic from medieval India. Okay, so we will continue from medieval India, and as all of you know, many questions are being asked from medieval as well as from modern history. Okay, so first we will cover medieval India and then modern history. So from medieval history, part we have to start today. That is from Delhi Sultanate. Okay, so Delhi Sultanate हमें first start करिए. Delhi Sultanate भी as all of you know that Delhi Sultanate is divided into 5 parts. Okay, that is your slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Saidi dynasty and Lodi dynasty. So today we will discuss on slave dynasty only. Okay, आज केवल आम slave dynasty ऊपर किसी MCQs discussion करिबा. Okay, so let's start. So before we start, one request to all: subscribe this channel if you have not subscribed, give a like and share it. So thanks a lot. Let's start. So first, the Sultanate of Delhi. Okay, that started from 1206. Okay, 1206 ରୁ start ହେଲା, 1526 ରେ end ହେଲା after the Battle of Panipat. Okay, so write down in the comment box. Battle of Panipat was fought between whom? Okay, कहा कहा भितर Battle of Panipat ହେଇଥିଲା 1526 रे, सेटा को अपन माने comment box रे लिखंतु. So Delhi Sultanate रे कोन थिला? Had only 5 ruling dynasty. 5टा dynasty थिला. कौन कौन से गुड़ाक ना फर्स्ट हूँ आमर स्लेव डायनेस्टी. ओके, ताको इबारी डायनेस्टी भी कहूँ. सेटा हूँ 1206 ରୁ स्टार्ट है एंड है 1290. देन हूँ आमर खिलजी डायनेस्टी 1290 ରୁ स्टार्ट है 1320 रे सरला. देन तुगलक डायनेस्टी. ओके, तुगलक डायनेस्टी 1320 ରେ स्टार्ट है 1413 ରେ सरला. देन आमर आसवा सईदी डायनेस्टी 1414 ରୁ स्टार्ट है 1451 ରେ सरला. देन हमें देखिए लास्ट इज योर लोधी डायनेस्टी. ओके, सो लोधी डायनेस्टी केबे स्टार्ट है 1451 स्टार्ट है 1526 रे सरला. एंड द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज इब्राहिम लोधी. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट today's MCQ section. So the first question is in front of you. The battle that led to foundation of Muslim power in India was. Okay, क्यों युद्ध मुस्लिम पावर को फर्स्ट फाउंडेशन देथिला? फर्स्ट होची द फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन, सेकंड बैटल ऑफ ताराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, you have to just pause the video. Okay, you have to pause the video and give the right answer, and at the end of the session you have to evaluate your score. Okay, and you have to assess yourself periodically. So what will be the right answer here? The battle that led to the foundation of Muslim power in India. कौन होगा आंसर? So it answer कौन है? Please give your answer. So here the right answer would be, that is the second battle of Tarain. Okay, so you know the first battle of Tarain was held between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. Who was defeated in that battle? Muhammad Ghori was defeated and Prithviraj Chauhan won the first battle of Tarain that was held in 1991. Okay, 1191 ହେଇଥିଲା फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन, जोटार कि मोहम्मद घोरी हारी जाइथिला, पृथ्वीराज चौहान जीति जाइथिले. बट द सेकंड बैटल ऑफ ताराइन दैट वाज हेल्ड इन 1192, who won that battle? In that battle, Muhammad Ghori was defeated badly and Prithviraj Chauhan won that battle, and that paved the way for the foundation of Muslim power in India. So Muhammad Ghori is called the real founder of Muslim empire in India. Okay, can you say when he ascended the throne? Okay, so he ascended the throne in 1173. Okay, so the right answer is the second battle of Tarain. After defeating
Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain, the Muslim power, the foundation of Muslim power was done. So let's move to the next question, that is question number 2. When the rule of Delhi Sultanate began? Kebe start hela Delhi Sultanate? Okay, I have already told you that when Delhi Sultanate started, 1106 AD, 1206 AD, 1306 AD, and that is your 1406 AD. Okay, so kebe Delhi Sultanate start hela? So what will the right answer here? So here the right answer would be, that is your option B, 1206 re start hela Delhi Sultanate. Okay, who was the founder of Delhi Sultanate? Sorry, founder of slave dynasty. Can you say who was the founder of slave dynasty? He is none other than he is Qutbuddin Aibak. Okay, Qutbuddin Aibak was the founder of your slave dynasty. Clear? So the slave dynasty started in 1206. Why this is called a slave dynasty? Okay, so as all of you know, Qutbuddin Aibak was the slave of Muhammad Ghori. Okay, so he was the founder of the slave dynasty in 1206 AD. Clear? And the Delhi Sultanate continued up to 1526. 1526 पर्यंत Delhi Sultanate continue कला till the Battle of Panipat, in which the last ruler of the Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi, okay, बाबरको ठारो परास्त होइतिले and Mughal rulers सेतबेले स्टार्ट हला बाबरको टाइम रे 1526 पर. Clear? So 1206 AD Delhi Sultanate began. Let's move to the next question. The savior of Delhi Sultanate was, Delhi Sultanate को savior माने किए रक्षा करे? When Delhi Sultanate was at great danger, who saved it? Okay, so option A, Qutbuddin Aibak, option B, Minas uz Siraj, option C, Iltutmish, and option D, that is Ghiyasuddin Balban. So what would be the right answer here? So the right answer कौन होगा? So here the right answer is your, he is none other than Ghiyasuddin Balban. So how Balban is called the savior of Delhi Sultanate? Okay, so after the death of Iltutmish, okay, Iltutmish को मृत्यु पर there is no Urdu ruler except in the slave dynasty except Rajia Sultanate. Okay, after the death of Rajia Sultanate, so there is a degradation of Delhi Sultanate and Ghiyasuddin Balban. He was the ruler who saved it. Okay, and during his period, he was the most successful slave kings among all the slave kings. Okay. Look, let's move to the next question, that is question number 4. Who is known as slave of a slave? Okay. Dasara Dasa. Slave of a slave. This is a very important question, and the questions which are being discussed here, these questions have been asked earlier in various exams. Okay. So, Purba exam re bahut gude question gude dekhya mili chhe. So these questions have been collected. Muhammad bin Qasim, then Mahmud Ghazni, then Iltutmish, then Qutbuddin Aibak. So slave of the slave कहाँ को कहा था? Muhammad bin Qasim, Mahmud of Ghazni, Iltutmish, Qutbuddin Aibak. So what would be the right answer here? Slave of the slave. So slave of the slave को कहा था Iltutmish. Why he is called the slave of the slave? As all of you know, Qutbuddin Aibak was the slave of Muhammad Ghori. Okay, he was a slave, and Iltutmish was, after the death of Qutbuddin Aibak, Iltutmish occupied the throne, and he was the son-in-law of Qutbuddin Aibak, and he was also a slave. So he is called slave of a slave. Okay. आमे जदि इल्तुतमिश का विषय कहवा, इल्तुतमिश was called the real founder of slave dynasty. Slave dynasty real founder Iltutmish को कहा था. And another thing, if you like to say about him, say Qutbuddin Aibak का टाइम रे लाहौर थिला कैपिटल, and Iltutmish कौन कले ना ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. ओके, लाहौर टू दिल्ली को कैपिटल को ट्रांसफर करथिले. And another most important things, से कौन करथिले ना, he divided his empire into इक्तास. ओके, इक्ता को कन्वर्ट कर देथिले, and से गोटे फाउंड करथिले कोन 40 टा कहथला
तुकानी चाहलगानी ओके चाहलगानी कहा था चालीसा कौन ना इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबल्स चालीसा गठन करथिले ओके दीज आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू रीड अबाउट इल्तुतमिश मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 द दिल्ली सुल्तानेट हु फेल टू हिज डेथ व्हाइल प्लेइंग पोलो खेलुवा समय मृत्यु घटी से किए कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक गियासुद्दीन तुगलक सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर सो इट राइट आंसर कौन हम ओके सो हियर द राइट आंसर विल बी दैट इज योर कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक डायड व्हाइल प्लेइंग पोलो ओके से केबे तांकर मृत्यु होइतिला 1210 1210 डेथ होता व्हाइल ही वाज प्लेइंग पोलो ही फेल पड़ी जाइए मृत्यु होता 1210 ओके सो ही वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट एंड स्टार्टेड द दिल्ली सुल्तानेट केबे स्टार्ट करथिले ना 1206 रे 1206 रु 1210 थिला तांका पीरियड कांकर ना कुतुबुद्दीन ऐबक ओके सो इफ विल टॉक अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक तांक से माने तांका विषय जते हमें कहबा ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी यू नो इट एंड ही वाज कॉल्ड लाख बक्स ओके लाख बक्स ताको भी कहते एंड से कौन करथिले बिल्ट आधा ही दिन का झोपड़ा बिल्ट करथिले आजमा रे एंड यू मस्ट हैव सीन दिस आधा ये जो क्वेश्चन आधा ही दिन का झोपड़ा किए करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक यू मस्ट हैव सीन इट इन मेनी एग्जाम्स ओके मेनी एग्जाम्स रे क्वेश्चन पचरा हिची आउ कोन तांका विषय हमें पढिबा ना से जो करथिले कुतुब मीनार फाउंड करथिले कुतुब मीनार से कहा का उद्देश्य फाउंड करथिले टू ऑनर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उद्देश्य से कुतुब मीनार फाउंड करथिले कुतुब मीनार ओके कुतुब मीनार फाउंड करथिले सो दिस वाज ऑल अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक सो मु साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन दे दी चलची यू नीड टू लुक इनटू इट सो लाख वक्स वाज ए टाइटल गिवन टू कहा को दिया लाख वक्स टाइटल इल्तुतमिश बलबन रेजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक सो लाख वक्स टाइटल कहा को दिया था सो ही इज नॉन अदर देन योर कुतुबुद्दीन ऐबक ओके कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहला व्हाई इज कॉल्ड लाख वक्स बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी तार उदारता बिकॉज ऑफ हिज जेनेरोसिटी ताकर उदारता पाई ताको लाख वक्स कहला एंड ही ऑलवेज वांटेड टू गिव large sum of money in charity से दान रे बहुत किसी दान कर दोथले for that reason he was called lakh bucks okay move to the next question that is question number 7 before assuming the office of the sultanate Delhi Balban was the prime minister of sultan kahar prime minister thile Balban okay this question is very good question so Nasiruddin na Kutubuddin Aibak na Bahram Shah na Aram Shah so Balban before assuming the throne he was the prime minister of the sultan he is Nasiruddin okay Nasiruddin ka prime minister thile Balban okay so who was the Nasiruddin he was also a member of Chalisa okay or we call it noble 40s clear so move to the next question that is question number 8 the first sultan of Delhi to issue regular currency and declare Delhi as the capital of his empire okay मु कहतली कि ओके लेट मी टेल द आंसर एंड आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दैट ऑप्शन ए इल्तुतमिश ऑप्शन बी आराम शाह ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑप्शन डी दैट इज बलबन सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर सो हियर द राइट आंसर इज योर गिव द राइट आंसर सो हियर द राइट आंसर इज योर इल्तुतमिश ओके सो इल्तुतमिश issued a regular currency and declared Delhi as the capital of his empire okay तो दिल्ली की कैपिटल डिक्लेयर करथिले इल्तुतमिश मु इल्तुतमिश का विषय बहुत किछि कहि सारछि से कोन करथिले न मु टिके कहि दोछि ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ओके से स्लेव डायनेस्टी रियल फाउंडर थिले एंड ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली ओके लाहौर रु दिल्ली को ट्रांसफर करथिले कैपिटल लाहौर एज द कैपिटल एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली ओके एंड से इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टंका एंड कपल जितल सेटा आपन जान जायछन्ती कपर जितल इंट्रोड्यूस करथिले आउ कोन करथिले ना 40 फॉर्मेशन करथिले ताहा कहूची तुकानी चाहलगानी ओके आउ से एता एम्पायर को इक्तारे डिवाइड करथिले आउ मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट थिंग दैट he saved the Delhi Sultanate from the attack of the Mongols okay Genghis Khan का अटैक से दिल्ली सुल्तानेट को रक्षा करथिले okay
आ ताकू कहउतला फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग मध्ये कहउतला काहाकू ना इल्तुतमिश को कहउतला. सो दिस इज द मोस्ट important things that you need to remember. Okay, so let us move to the next question. Question number 9. Which of the Delhi sultans pursued the policy of blood and iron policy? So blood and iron policy किए pursue करथिले? Option A Alauddin Khilji, option B Ghiyasuddin Tughlaq, option C Balban and option D that is Iltutmish. So what would be the right answer here? So the right answer कौन हबो? Who pursued the policy of blood and iron? Okay. So here the right answer is none other than Balban. Okay. Balban pursued the title policy of blood and iron. Okay. As I told you earlier, after the death of Iltutmish, so his successors were very weak except Rajia Sultana. Okay. So at that very moment, Balban saved the Delhi Sultanate, and he was most successful ruler among all the slave kings. He is Balban. He was also a member of Chalisa. Okay, and he separated the military department that is called Diwani Arij from the financial department that is called Diwani Wazirat. Okay, एवला क्वेश्चन पचारे Diwani Arij, Diwan-e Arij एटा को department? This is called a military department. Diwani Arij थिला military department और Diwani Wazirat एटा थिला financial department. ओके आउ से कौन करथिले ना से इंट्रोड्यूस द इरानियन एटिक्यूज सिजदा और पाइबस. सिजदा पाइबस का कोनती, सिजदा का कोनती, सिजदा कोनती जाको मुंडा माडी नमस्कार करियो सेटा कोनती सिजदा. ओके कौन करथिले ना सिजदा, SIJDA. ओके DA सिजदा, सिजदा और पाइबस PAIBOS. ओके सिजदा और पाइबस से इंट्रोड्यूस करथिले. की करथिले ना बलबन. सिजदा माने कोन ना, सिजदा माने होची मुंडो माडी नमस्कार करियो, आ पाइबस माने होची पाद को चुंबन को पाइबस माने. ठीक अछि. आउ कोन बलबन को विषय आमे कहबा ना तांको कहथले तासी को टाइटल नेतला जिल-ई-इलाही. तांको जिल-ई-इलाही टाइटल दिया हेतला. आउ कोन कहथले ना सी गोटे इंट्रोड्यूस करथले गोटे पर्शियन फेस्टिवल ता कोन नवरोज. ओके ये क्वेश्चन रे बहुत देखिया मिलची नवरोज गोटे पर्शियन फेस्टिवल से इंट्रोड्यूस करथिले नवरोज. ओके नवरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करथिले. क्लियर. नवरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करथिले के ना बलबन. So this was all about Balban who introduced blood and iron policy. So let's move to the next question, that is question number 10 and today's last question. Okay, so very small fragment. I have taken most important questions from Delhi Sultanate, and today, tomorrow, in the next session, we will discuss about Khilji dynasty. Okay, Khilji dynasty विषय में discussion करेगा. So here the last question. During the course of his numerous invasions, Muhammad Ghori, before his conquest in the second battle of Tarain, was defeated by. Okay, Muhammad Ghori second battle of Tarain पूर्वरु काहाटू defeat हेतिले. So second battle of Tarain केबे हेतिला ना 1192 रे हेतिला. Okay, second battle of Tarain, this battle paved the way for the foundation of Muslim rule in India. Okay, so second battle परे ही Tarain परे ही Muslim rule found हेतिला इंडिया रे 1192 रे, जोटरे कि पृथ्वीराज चौहान हरैथिले काहाकू, सॉरी मोहम्मद घोरी हरैथिले पृथ्वीराज चौहान को. बट बिफोर वी नो दैट 1191 सेटा हेतिला फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन. ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन ने मोहम्मद घोरी हारी जाइथिले काहाटू ना पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी हारी जाइथिले. सो फर्स्ट डिफीट एंड मोहम्मद घोरी आउ गोटे डिफीट मध्ये नकर हेतिला. से काहाटू हारिथिले ना ही वाज डिफीटेड चालुक्य किंग भीमा. ओके चालुक्य किंग भीमा को हारी जाइथिले गुजरात रे सिथिले. सी इज द फर्स्ट डिफीट. एटा प्रथम हारिथिले. ओके से फर्स्ट हारिथिले. से केबे हारिथिले ना 1175. ओके सॉरी 1158 ना से चालुक्य किंग 1175 एडी परे हारि जाइथिले भीमा टू कोठा से चालुक्य किंग गुजरात. आ जो जो बैटल ता थिला ताको कोन होतला ना बैटल ऑफ अनिलवारा. So battle of Anilwara ताको कहा होतला. So this battle is not mentioned in the book. Okay, please note Anilwara. बैटल ऑफ अनिलवारा जोथरे कि से भीमा टू कोठार हारि जाइथिले के ना हमरो मोहम्मद घोरी. ओके सो दीटा युद्ध सारिले गोटे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ अनिलवारा जोटा भीमा टू कोठार हारिले. सो दिस वाज ऑल अबाउट. Thank you so much for watching this with patience, and do subscribe this channel if you have not subscribed.
give a like if this somehow helps you in for the upcoming exams. And one thing that since our country is running through a very critical condition, so use mask, use sanitizer, avoid social gathering, stay safe, stay healthy. Okay, जितने कम समय बाहर को बाहरंतु. Thank you so much. Thanks a lot for watching this video. Thank you again.